go to the more complex one later. Yeah, so second one is over, I think, Ajit. ये दूसरा Yes, जो it's over. चित्र है It's over. इसके बारे में किसी का कोई सवाल है? The third जी, one go will ahead. raise some questions. Sure. Now, this is a more advanced graphic of ये this थोड़ा particular. और ज्यादा विस्तार में बताया हुआ चित्र है, तीसरा वाला जो हम दाईं ओर देख रहे हैं, जहां मेरा माउस चल रहा है. So we have the green external stimulus. यहाँ हम वही हरे रंग से दिखा रहे हैं कि बाहर से एक सिग्नल आया. And we have our consciousness, which is in blue. What reaches the consciousness, which is in blue. ब्लू रंग से हम देख रहे हैं कि जो सिग्नल हमारी चेतना तक पहुंचते हैं. And then we give a stimulus, we give a response, which is in red. This was और our earlier scheme. जो जवाब देते हैं वो लाल में है. Yeah, but now we are adding some more elements. और हम इससे कुछ और तत्व जोड़ रहे हैं. So the first thing is, in the senses, we have external senses and internal senses. हमारी सेंसेस को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, जो बाहरी हैं और जो अंदरूनी हैं. So what are the internal senses? जो अंदरूनी सेंसेस हैं वो क्या हैं? There is a sense of synesthesia, which is a general feeling inside the body, which tells you how the body is feeling at the present moment. It gives you a sense. That is, when you have a fever, you have a different feeling of the same body. हम शरीर को अंदर से जो महसूस करते हैं वो एक अलग तरह का महसूस करना एक चित्र है. उदाहरण के तौर पे हम साधारणतः जिस तरह अपने शरीर को महसूस करते हैं और जब हम बीमार होते हैं तब जो महसूस करते हैं, तो ये हमारा महसूस करना, हमारा अनुभव अलग अलग होता है. So there तो are हमारी many ये aspects of अंदर की इंद्रियां हैं जहां ये सब हम महसूस करते हैं. right. Antonio, we will discuss this fully in the next diagram. Shall we? More fully? You mean here, Ajit? Yeah, when we go to this, that Antonio will take up. So जब हम अगले चित्र में जाएंगे तो इसको ज्यादा विस्तार से देखेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा कम विस्तार में देख पाएंगे. So the synesthetic impulses, are detected by the internal senses. हमारी जो आंतरिक इंद्रियां हैं वो इस चीज को महसूस करती हैं. Yeah, so the various things of pain, which doesn't come from outside. I've got a headache. I'm not feeling so well. Yeah, my heart is racing. मान लीजिए मेरे को सिर दर्द हो रही है या शरीर में कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको जो मैं महसूस करता हूँ वो शरीर के अंदर महसूस होता है. There's the kinesthetic, in which I can tell spatially with the sense of space, dimensions. I can tell where my toe is at the present moment and where my hand is. It gives me that sense. एक दूसरी sense of my body. तरीका है काइनेस्थेटिक, जिसमें उदाहरण के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को कहाँ पे वो हैं वो महसूस कर सकता हूँ. ये अलग तरह की एक इंद्रिय महसूस करने का तरीका है. This is important to know
there are internal senses is important to know, because the internal senses also act upon the external stimulus. हमारी अंदर भी इंद्रियां होती हैं, ये जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका भी असर जो बाहर से सिग्नल आ रहा है उसके ऊपर पड़ता है. So when this is received by the external senses and acted upon by our internal senses, at that time, one goes to the memory in terms of a recording. Some जो part of it. हम बाहर से सिग्नल आते हैं और हमारी बाहरी और आंतरिक इंद्रियां इनको देखती हैं, इनको पहचानती समझती हैं, तो ये सारा कुछ हमारी यादाश्त में रिकॉर्ड हो जाता है. So now that perception that we are seeing is split into two. The external perception which we saw in the first one, and the second one, the external perception, and now we also have the added internal perception. तो यहाँ जो बाईं ओर के चित्र में आप देख रहे हैं कि बाहर से कुछ आया और इंद्रियों ने देखा और उसको कॉन्शियसनेस में भेजा. अब यहाँ वो दो इंद्रियों ने देखा, बाहरी इंद्रियां और अंदर की आंतरिक इंद्रियां, और उनके बाद दो इसके ऊपर प्रतिक्रिया हुई. पहला तो ये यादाश्त में रिकॉर्ड कर दिया गया और दूसरा ये कॉन्शियसनेस को भेजा गया. Yeah. And so from the memory, a signal also comes to the consciousness. यादाश्त में जब ये सिग्नल गया तो यादाश्त ने इसके बारे में वहां से कुछ ढूंढ के बताया और वो भी एक सिग्नल के रूप में चेतना को गया. यानी अब चेतना को दो सिग्नल गए. Now this is very important to understand. In that say I'm going to button my shirt. ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना. उदाहरण के तौर पे मैं अपनी कमीज का बटन बंद कर रहा हूँ. But if I do not get the remembrance from the memory that this is a button, I will not know how to proceed. अगर मुझे मेरी यादाश्त से ये नहीं पता लगेगा कि ये बटन है, तो मुझे उसके बारे में क्या करना है वो समझ नहीं आएगा. So there is the memory helps us to recognize within ourselves, to recognize objects from the outside or our recordings, the recordings that we have, because these are all recordings. What is the remembrance eventually? But the remembrance is imbued with a lot of characteristics. ये सारा कुछ जो यादाश्त है, लेकिन यादाश्त के बारे में भी कुछ एक तरह के नोट्स हो जाते हैं कि ये यादाश्त कैसी है. तो अगर वो ये समझना जरूरी है कि अगर वो यादाश्त वहां ना हो तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और हम जो करते हैं उसके बारे में यादाश्त से हमें आता है कि इसको क्या करना है, ये क्या चीज है. Now, if the stimulus was something that I liked before, then I would evoke a remembrance of that. So अगर सिग्नल ऐसा था जो मुझे पसंद था, तो मुझे उसके साथ जुड़ी हुई पसंदीदा यादें याद आ जाएंगी. The remembrance which is sent to the consciousness, no? जो यादें वहां से चेतना को भेजी जाएंगी. The one that I like. If it's something I didn't like, जो कि मुझे then I would पसंद get थी. that kind of. और अगर मुझे उस सिग्नल के साथ जुड़ी हुई चीजें पसंद नहीं थी, तो मुझे वो याद आएंगी कि वो मुझे पसंद नहीं थी. So depending on what the stimulus was, what the remembrance was, from the consciousness, there's one level here, there's one aspect here that there are levels which may come in the next one. From the consciousness, the processing which is done finally sorts out images for the response. तो इस बात पे निर्भर करेगा कि मेरा उस जो सिग्नल आया उसके बारे में मेरी यादाश्त कैसी है. उदाहरण के तौर पे वो मुझे पसंद है या ना पसंद है, तो उसके हिसाब से चेतना में उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके ऊपर काम होगा और वहां से जवाब उसी हिसाब से आएगा.
and goes to the centers of response, which are 4, ये they're actually 5. ये जवाब देने के जो हमारे केंद्र हैं, 5 केंद्र हैं, वहां जाएगा. So they are the intellectual, the emotional, the motor, and the vegetative. जो हमारा इंटेलेक्चुअल दिमाग वाला केंद्र है, और जो दिल वाला केंद्र है, और जो हमारा वेजिटेटिव, हाउ डू यू से अजीत, Not motor. मोटर, जो हम काम करते हैं, सारी गतिविधियां करते हैं, उसका सेंटर, And the vegetative, और उसके नीचे वेजिटेटिव सेंटर, the whole process of digestion. जी, हो गया. एक बार मोटर के बारे में कहेंगे, मोटर के बारे में एक बार फिर से कहेंगे. मोटर सेंटर है जहां से सारी गतिविधियां होती, गतिविधियों के रूप में जवाब होता है. हाँ, वो जो 5 जो है क्या क्या है, दिमाग, दिल, कार्य करने वाला, और वेजिटेटिव. हाँ, और 5वां, which is the 5th one, Ajit? The vegetative is actually composes 2 parts. You have the vegetative, which is the normal functioning of your body, your heartbeat, your breathing, your digestion, all that. And there's a sexual center. वेजिटेटिव सेंटर के 2 हिस्से हैं. एक हिस्सा जहां जो शरीर के अंदर सारा खाना पचाना और वो सब करने का गतिविधि होती है, और जो दूसरा हिस्सा है जहां से सेक्स की गतिविधि होती है. So according to what the images are, which is sent to the centers, you get a response. You give a response, not get a response, you give a response. चेतना से जिस तरह की छवि सिग्नल के रूप में आती है हमारे सेंटर्स में, उसी हिसाब से वहां से जवाब जाता है, जो ये लाल में है. So when the centers got the signal, there was an internal sensation of receiving this, and that goes to the senses. हमारे इन केंद्रों में जब ये छवि आती है कि क्या जवाब देना है, तो उसके बारे में एक महसूस करने वाला सिग्नल जो है वो हमारी आंतरिक इंद्रियों में जाता है. And then after the response is given, or alongside with the response, as you're giving the response, we get a feedback in terms of a sensation. We get a feedback of the response, in the sense whether the response was adequate, not adequate, was it good, bad. You mean how we feel about it, Ajit? No, the response that we gave, but we Yeah, feel, there would be a sensation of the response. हाँ. तो जो केंद्र से जो जवाब जाता है लाल रंग का, उसके साथ साथ में उस जवाब के बारे में जो हमारा अनुभव है, जो हम महसूस करते हैं, वो हम उसको आंतरिक इंद्रियों में जाता है. So this is the scheme. Now we go to a more elaborate scheme, which Antonio will take up. Ajit, I have a question here. I have a question here. That when from the center, there is a stimuli going as internal sensation to the internal senses. Is this also recorded? Is this also? I didn't get that. You broke up. I didn't get you. Is this also recorded in the memory? This the center, when it sends an internal sensation to the internal sense, is this also recorded in the memory? Yes. That's why the remembrances which are there, they are infused with all this data. तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि ये केंद्र ने जो आंतरिक सेंसेशन सिग्नल भेजा हमारी आंतरिक इंद्रियों को, ये हमारी याददाश्त में भी रिकॉर्ड हो जाता है. और इसी तरह
जो हमने बाहर जवाब भेजा और उसके बारे में जो हमने महसूस किया वो भी हमारी याददाश्त में रिकॉर्ड हो जाता है। Now, this is continually happening. It's not static. It happens and it stops. This is continuously happening with us. ये सब ऐसा नहीं है So, कि एक बार हुआ और रुक गया, ये चक्र चलता रहता है। so I'm meeting somebody for the first time, उदाहरण के तौर पे मैं but I've किसी को got a पहली बार bad मिल रहा report हूँ, about this person. I've got a लेकिन bad report about this person. मैं एक व्यक्ति को पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट मिली हुई है। So now, when I meet him, I see him, and those are from the external senses. No? I shake his और hand. जब मैं उस व्यक्ति को मिलता हूँ, मान लीजिए हाथ नमस्ते करता हूँ या हाथ मिलाता हूँ, तो ये सब मैं बाहरी इंद्रियों से महसूस कर रहा हूँ। Yeah, but there are internal senses also, which are telling me the pressure of his hand. आंतरिक इंद्रियां हैं जो मुझे बता रही हैं, उदाहरण के तौर पे वो मुझे मेरे हाथ मिलाता है तो उसका कैसा लगता है। Now, what happens is that I may be clouded by the previous data that I got. हो सकता है मेरे But in the दिमाग में course of उसके talking to प्रति him, जो रिपोर्ट से डेटा आया है वो मुझे प्रभावित कर रहा है कि ये व्यक्ति नेगेटिव है, लेकिन जब मैं उससे बात करता हूँ, as we continue speaking, I find that this person doesn't seem as bad as they portray him to be. मुझे लगता है उसके साथ बात करते करते कि वो व्यक्ति उस तरह का नेगेटिव नहीं है जैसा कि उस रिपोर्ट में कहा गया है। That is my response to him, his response to me. We मेरा kind उससे of बात vibe. करने का तरीका, उससे मेरा बात करने का तरीका, ये सारा कुछ जो अंदर चलता है, we kind of So what actually happening is that we're constantly updating. We're constantly updating our memory with this तो इसमें क्या data. हो रहा है कि हम लगातार ये जो हमें सूचना मिलती जा रही है उससे हम अपनी याददाश्त को अपडेट करते जा रहे हैं और चीजें बदलती जाती हैं। And when we part, are you there, Sudhir? और जब हम अपना ये वहां से अलग होते हैं, we part on good terms, and I look forward to meeting him the next time. There is और हम एक go ahead please. a tendency, within me, that I look forward to meet him the next time. तो इस तरह की मिलने के बाद जब हम बिछुड़ते हैं, जब हम अपनी मीटिंग खत्म करते हैं, तो हमारे मन में ये होता है कि उस व्यक्ति को दोबारा मिलेंगे, तो हमारे मेमोरी में उसके बारे में जो बात आई थी वो अपडेट हो गई। Right? And of course, because of memory, when I meet him next time, I have an image already. And now suppose he's lost weight. Suppose he's lost weight. I meet him after 3 weeks and he's lost weight. He was not well or whatever. I immediately recognize that this person is not exactly the same person that I met before. उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं अगली बार उससे कुछ हफ्ते बाद मिलता हूँ और उस व्यक्ति ने उस बीच अपना वजन काफी घटा लिया है, तो मैं तुरंत पहचान जाता हूँ अपनी याददाश्त से कि बंदा तो वही है, लेकिन उसने अपना वजन घटा लिया है। Yes, so the image that he presents is different from the image that I have in my recording, and now we update a new image. अब उसकी जो छवि दिखती है, वो जैसा दिखता है वो पहले वैसा नहीं था जो मेरी याददाश्त में है, लेकिन अब मेरी याददाश्त में वो छवि अपडेट हो जाती है। So this is a continual process. तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ये लगातार होता रहता है, ये ऐसा नहीं कि हो गया खत्म हो गया, ये चलता रहता है। So any questions, or we go into the next one, which covers this actually? कोई सवाल या हम अगले चित्र में जाएंगे जहां ये सारा कुछ और विस्तार से बताया गया है। Antonio, be so kind as to take the next part. Okay.
एंटोनियो, आपसे प्रार्थना है कि आप इस हिस्से को समझाएं. एंटोनियो will explain in Hindi and I will translate to English. Yes. Okay. So thank you, Ajit, for the development of those schemes. अजीत, अभी तक का समझाने के लिए धन्यवाद. It's very important to understand that we can progress enormously in our personal development without knowing any of these schemes. ये समझना बड़ा जरूरी है. Without knowing or with knowing? Without knowing. कि हम ये सब जाने बिना भी अपने आंतरिक कार्य में तरक्की कर सकते हैं. So nobody should worry because it finds these representations terribly complicated. तो ये सब अगर बड़ा कठिन और मुश्किल लगे तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. Is part of the study called auto knowledge or self liberation. ये जो सेल्फ लिबरेशन की हमारी किताब है उसका हिस्सा है ये. That intends to go into the nitty-gritty of some mechanisms. जो हमारी चेतना का जो काम करने का तरीका है उसमें विस्तार में जाती है. In order to illustrate some general concepts of the work of human psyche. ताकि इंसान का जो काम करने का तरीका है दिमाग का उसके बारे में वो समझा सके. Something that Ajit mentioned a couple of times and is extremely important is to understand that we never see all this static in a fixed representation like the picture there in the computer. जैसा कि अजीत ने बताया, ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये एक फिक्स्ड एक पिक्चर की तरह, एक फोटो की तरह नहीं रहता है. ये चलायमान स्थिति है जो चलती रहती है. This is always in continuous dynamic. It never stops. ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है. It stops only when we die. ये केवल मृत्यु पे रुकता है. Probably other processes get started then, but we don't know about those. हो सकता है तब कुछ दूसरी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं जिनके बारे में हमें ये नहीं पता अभी, लेकिन ये बंद हो जाता है. Also, these phenomena do not work one after the other. You go to number 1 and number 2 and number 3. Nothing works like that. इसमें जो काम होता है वो 1, 2, 3, 4 गिनती से नहीं होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. ये अलग-अलग तरीकों से चलता रहता है. They work simultaneously and interacting among themselves. उसके कई हिस्से एक साथ चलते हैं और वो एक दूसरे के साथ जैसे बातचीत करते हुए, एक दूसरे के ऊपर असर डालते हुए, एक दूसरे से असर पाते हुए चलते हैं. If we try to imagine or represent what is the psyche in movement, would be completely plagued by little dots and lines and points and numbers and things. It would be impossible even to apprehend. अगर हम इस मनस की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है. वो ऐसा नहीं है कि इसी एक ही तरीके से चलती है. What these schemes here incorporate is the levels of consciousness. यहाँ जो हम दिखा रहे हैं वो हमारे चेतना के स्तर को दिखाने की कोशिश की गई है. All these processes of the psyche, they take a different shape when you are sleeping, when you are in semi-sleep, or when you are awakened. चित्त के ये जो चलने के तरीके हैं, ये हमारे जो स्तर हैं, हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं या बड़ी अच्छी कंडीशन में है या खराब में है, उसके हिसाब से अलग-अलग तरीके से चलते हैं. When you are asleep, predominantly the psyche receives information
from the intra-body. जब उदाहरण के तौर पे जब आप सो रहे हैं तो जो आपको सिग्नल आते हैं वो आंतरिक जो क्या The inside of your body, because शरीर के अंदर जो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है जो आंतरिक हमारे सिग्नल की कैपेसिटी है उससे आ रहे हैं. the external senses are annulled. Your So- eyes are shut, you don't see anything, and then your senses, your hearing, etc. Probably the threshold of the senses is tiny. If there is a very intense light that for some reason impacts over you when you are asleep, I mean, you may remember something while you are dreaming, like transformed into a flash of some type or etc. But normally the threshold of the external senses is reduced to the minimal, and there is no direct stimulation of the psyche. जब हम सो रहे होते हैं उदाहरण के तौर पे तो हमारी आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से हमें सिग्नल आते हैं. जो बाहरी इंद्रियां हैं वो उस समय बंद होती हैं लेकिन वो कभी भी खुल सकती हैं. उदाहरण के तौर पे अगर सोते सोते बहुत जोर की आपके ऊपर रोशनी पड़े तो हो सकता है उस समय आपको एक सिग्नल आए और वहां से उसके ऊपर असर पड़े. लेकिन अधिकतर उस समय काम जो है वो आंतरिक इंद्रियों से होता है. The internal senses translate then sensations of pressure, sensations of acidity in the body, sensations of different metabolic processes taking place, but also the metabolism of your memory, the metabolism of your impressions that tend to be classified and reclassified in your memory. It's as if when you are sleeping, the memory, like a librarian, starts to take pieces of information from your daily activity and take them to the right shelves, to the different categories of objects that has to classify, because the memory needs to go classifying the information in order to make it useful in the process of adaptation to life. Sometimes it classifies it badly or classifies it goodly, I don't know. But that is what tends to happen, and that is translated into our dreams when we are sleeping. उदाहरण के तौर पे जब हम सो रहे होते हैं दबाव पड़ रहा है अंदर शरीर में किसी भी तरीके से या बाहर पाचन क्रिया के कुछ प्रेशर हैं, ये सारा कुछ जो अंदर चलता है वहां से सिग्नल आते हैं और वो सारा काम अंदर चलता रहता है और वो सपने के रूप में दिखते हैं. दूसरी तरफ जो हमारी याददाश्त है वो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक लाइब्रेरियन है और वो जब लाइब्रेरी बंद है जब लोग भी हमारी चेतना जो है वो अलग तरह से उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करती है. तो ये सब हमारे नींद में चलता रहता है. जो सपने जैसा चले वैसा दिखे, हमारे सपनों के ऊपर उसका असर होता है. Yes, Anthony. In semi-sleep, that is where the arrow is pointing, is a bit of the level of sleep and the level of vigil. Is the operation of the centers and the operation of the psyche is sort of intermediate. The senses are more receptive, the external senses, they open up a bit, but they are distorted. Still, the thresholds are very limited. And the level of sleep erupts in the consciousness still to a very important extent. And the same thing that you could perceive without any register when you are sleeping, in semi-sleep you have registered, but the consciousness at the same time interprets that information in manners that they are stuff of dreams, that is fantasy, that is a bit unreal. And that is extremely interesting because that form of images
allows to penetrate also the deeper levels of the consciousness in terms of time, in terms of space, without resistance, without barriers. And that's why we tend to induce that level of consciousness a bit when we do our guided experiences, or when we do transferences. You sort of close your eyes and you let yourself go into your internal world if you want, but at the same time being a bit aware of what is happening. And so lots of things that normally are not accessible to the vigilic consciousness, to the day-to-day consciousness, then starts to become more accessible. And the person, many times, with an expert guide accompanying in the process, can, in that form, penetrate sources of conflict, of unhappiness, of situations that were almost forgotten in life, and rescue that information. And many times relive conflicts or situations that are undesirable. Therefore, the consciousness had it suppressed, and try to resolve or try to reconcile or try to change the perspective about that situation. And in that way, through the technique of self-transference, we take advantage of that mechanism in order to produce important changes in our psyche. And then in the vigilic level of consciousness, that is in darker blue here in the bottom, the whole system of the psyche, it tends to give emphasis to the external senses, to activities of the centers that are more abstractive, that are sort of the highest possible level of operation of the centers. And the whole scheme moves as you would register in your day-to-day life. When you are doing business and you are calling on the one hand, one client, on the other hand, you are dealing with a problem that you have at home. On the other thing, you are taking a note about something that you don't want to forget in the afternoon. You are doing lots of operations very quickly, and therefore you are having high demand, your centers of response and your memory, and you are all the time looking for new information in your memory and bringing it back, and you structure and restructure the information that you receive from it, etc. It tends to accelerate, and everything takes a more intense rhythm. And at the same time, the internal senses get sort of in the background, don't give us much information as they could have in the semi-sleep or in the deep sleep. All this is a matter of shades. No? It's not absolutely like that in one case or another, depending what are the demands, what are you trying to do with your psyche at that particular time, or what is that your psyche tries to do by itself. Because although we are talking of relatively higher and lower levels of consciousness, the vigilic level of consciousness, although it's the highest that we have access in our day-to-day life, is not the highest possible for our kind, for our species. For example, when we move into a level that would be higher than this, that would be much deeper blue here, under the deep blue, that is called consciousness of oneself. And the state that corresponds to that level of consciousness is self-observation, auto-observation, where the psyche, at the same time that is giving response to the external requirements of life, at the same time is observing and taking samples of all its operations. So they can direct and can correct to an extent that in normal life it's not possible. So at that point, probably it would be possible to see all this scheme of the psyche in dynamic, in operation, doing all its simultaneous things, and you would be able to more or less trace them and to understand them better.
and to detect things and to observe things that otherwise would be very difficult to observe because they move very fast and because they require a level of attention that is beyond our normal possibility of doing. That is why traditional psychology in the category of science finds it very difficult to explain coherently the human psyche. They do lots of theories, but they are incapable of having real and profound and meaningful information because the psyche doesn't allow it to be observed just through the theory channel, the purely intellectual approach. Anyway, those are conversations and they are viewpoints in general terms. The important thing is that these schemes illustrate the multiple operations of the consciousness, because the consciousness is, in general terms, what we are talking about. The circle here is the consciousness. And when we talk about centers and when we talk about senses and we talk about memory, they are all specializations or functions of the consciousness. Because until my consciousness, for example, recognize that the information that comes from the senses, unless is interpreted by the consciousness, doesn't exist for my consciousness, for me, for my psyche. A bird that comes flying there, I can look at the window and see, oh yeah, it's a bird, and I can identify the type of bird. But that happens only when that image that came through the sense, I mean, that perception is interpreted by the consciousness through the mechanism of memory. The memory automatically appeals to information to see what is that. Is a bird, is such type of bird. And then the bird appears to me and exists only in the moment that the consciousness can register it. Before that, nothing. So everything that is not the consciousness is for us, from this viewpoint in this scheme, the world. So we talk about the consciousness and the world from that viewpoint. Even our own body is part of the world. It's something of which we have reference, although it's the physical seat of the consciousness, is external to the consciousness, and therefore is part of the world. So these schemes are quite interesting. They are very suggestive, but as I said before, they are not essential to progress enormously in our personal development. So nobody should feel discouraged by this apparent complexity, because he's trying to stop for a minute as taking a picture of something that is essentially movement and transformation and interaction within each one of these components. So although this is an approximation for its understanding, in no way it's a picture of what is the consciousness or the psyche. And I don't think that there is much more to from this perspective from my side to comment at this particular stage. Antonio, may I ask something? Yes. These three levels of consciousness, the base level is semi-sleep and vigil and objective consciousness, right? Or as you say, consciousness of self or auto-consciousness. Well, objective consciousness is a theoretical level of which we don't have such easy access. It is said that as an accumulation of consciousness of yourself, this objective consciousness tends to manifest more often. It requires huge accumulations of energy, of good energy within the psyche. And then, that's a great point. I have a question here, if you don't mind.
if you have the time, I'd like to ask one question. Yeah. It is said that, like you said about self-observation or observation. Is it true that through self-observation, it is not sustainable to rise the level of consciousness to consciousness of self or auto-consciousness? Is that true? No, the self-observation is the state that corresponds to a consolidated state of consciousness of oneself. Right. Now, Instead of you having the sensation of your hand or whatever, in order to break into the bottom of that state, the state that corresponds to it when is fully deployed is self-observation. And your point of support to keep that state is self-observation. So this by itself is a corollary. That does that mean that or there are some schools of practice which have this belief or have this practice that the more there is auto-observation or more there is self-observation or observation of self, the level of consciousness does tend to rise, but just that it is not sustainable. So as a practice, like we do divided attention exercises in self-liberation, isn't it true that somewhere Negro said that this cannot be used as a practice? Like it cannot become a practice. It is just to test the waters. Is that correct to say, or not so much? Well, depends to who he said it and in which context. But if you from the level of vigil, you try to practice self-observation, of course, your interest and your attention will disappear after a short period of time. But if your consciousness is awakened, I mean, that will be part of an awakened consciousness. And that's why it's so interesting not to speculate about those things that are too much beyond our reach at this stage, because those most probably will be problems that you will have to explore when you start to advance into those levels. I mean, many of the answers will come to you and you will ask the questions to yourself and you will obtain the answers, you see. But when when we elaborate about the things without the basic conditions for it, it creates lots of new fantasies that really don't help to your progress. And that's what I have to say about that. What about divided attention? What's your opinion on divided attention in the context or level of consciousness? Yeah, it's a first step, divided attention, to get into consciousness of yourself. Great. Because in order to divide the attention, you have to stop revering. Correct. And the flow of revering stops, and therefore that energy gets channeled into the fueling the level of consciousness of oneself. The problem is that we are burning energy continuously in the psyche, and that is an impediment to move forward into a higher level. Now, as a master of at least the mental discipline that you are, I have a subsequent question. Is divided attention sustainable as a practice? That's the question. Definitely. Because without divided attention, unless the attention divides definitely into two poles, you will not be at the same time develop your day-to-day activities and block and give direction to the process of revering. So certainly, but you will have all the time as a point of support and observation of your psyche. So the state that corresponds to a properly divided attention is consciousness of yourself and auto-observation. They come together. Yes. Great. Thank you so much. Very helpful. Thank you. But when you start to work in this thing, it doesn't happen overnight. You need to be very persistent, very permanent. And there you are trying to divide the attention, and suddenly you achieve it for a short period of time, and then it goes back to before, etc.
So you have all this jumping until things start to become more permanent and consolidate a bit, etc. So both were right in your observations. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. हिंदी में सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि एंटोनियो का इतना लंबा जो है भाषण उसको मैं इतने मुश्किल शब्दों को अनुवाद कर सकूं, लेकिन हम लोग किसी और सेशन में इसके बारे में अजीत की मदद से थोड़ा आराम से बात करेंगे। पर यहाँ पर इन्होंने वही समझाया कुछ और विस्तार से जो हमने यहाँ देखा, ये इधर तीसरे वाले में देखा। ये बड़ा रुचिकर है, बहुत जरूरी है जानना। लेकिन जैसा एंटोनियो ने कहा कि अगर आज हम इसको समझ नहीं पाए, तो जैसा एंटोनियो ने कहा कि अपनी आंतरिक तरक्की के लिए इसको बहुत विस्तार में समझना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी वो हो जाएगी। पर हम इस विषय को छोड़ेंगे नहीं, भविष्य में ज़रूर हिंदी में करेंगे। हमें तो सुधीर जी, अगर आप चाहो तो मैं इसको एक मिनट में अनुवाद कर सकता हूँ। 1 ही मिनट लगेगा। डू यू हैव द मिनट? ओके, ओके। शंकर जी, मंजू जी, अनिल जी, ये बेसिकली मैंने जो सवाल पूछा वो ये था कि चैतन्य का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए अगर मैं मेरे ध्यान से देखता हूँ तो क्या ये उपयोगी है, क्या ये हो सकता है? तो उनका ऐसा बोलना था कि ये जो विषय है कि ध्यान को ध्यान से देखना, ये बात का विषय है, और ये विषय हो तो सकता है, बट उसके बाद मेरा सब्सिक्वेंट क्वेश्चन था कि ध्यान को बटा हुआ रखना, जो अपना एक सेल्फ लिबरेशन का प्रैक्टिस है कि ध्यान को बटा हुआ रखना, मतलब मैं आपको सुन रहा हूँ और साथ ही मेरा ध्यान समझिए मेरे हाथ के ऊपर है या मेरे सर के ऊपर है, तो ध्यान 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो जैसे ही सवाल था कि क्या ये जो अपना प्रैक्टिस है सेल्फ लिबरेशन का, जहां अपन ध्यान को 2 हिस्सों में बटा हुआ रखते हैं, क्या ये उपयोगी है? पहला सवाल। दूसरा, क्या ये सस्टेनेबल है, मतलब क्या इसको कंटिन्यूअसली कर सकते हैं कि ये विषय के जो करने वाला व्यक्ति है, जो प्रैक्टिशनर है, वो फेल हो जाएगा? क्या ये हो सकता है? क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये लंबा चलेगा? तो उनका जवाब ये था कि ये बिल्कुल लंबा चलेगा, ये प्रैक्टिस बिल्कुल हो सकता है। और लेकिन ये करते वक्त जो दिक्कतें होंगी, जो मुश्किलें होंगी, वो ये होंगी कि करते वक्त जो प्रैक्टिशनर या जो प्रैक्टिस कर रहा है वो फेल हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा, वो करेगा टूट जाएगा, करेगा टूट जाएगा, करेगा टूट जाएगा। तो अगर वो छोड़ देता है बीच रास्ते में, तो फिर उसका चैतन्य के स्तर का जो बढ़ने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। और उसका दूसरा हिस्सा ये है कि जब हम ये करते हैं तो हमारा जो यहाँ विचार आते हैं कंटिन्यूअसली, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, उसको हम बोलते हैं रेवरी। जो अपना रेवरी का एक सब्जेक्ट है जो अपन ने सीखा था पहले। तो रेवरी जो है वो जब हम अटेंशन को डिवाइड करते हैं या ध्यान को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, तो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, रेवरी आना बंद हो जाता है, जिससे जो ऊर्जा बच जाती है, जो रेवरी में खर्च हो रही है, वो सारी ऊर्जा अपने को अवेलेबल हो जाती है अपने चैतन्य के स्तर को ऊपर ले जाने। बिल्कुल। ये विचार जी। हाँ, मैं चेतन आपकी बात की बात नहीं कर रहा था, मैं एंटोनियो की बात की अनुवाद की बात कर रहा था। या तो उनका ही अनुवाद किया सर मैंने, जो उन्होंने हाँ, बताया वही अनुवाद। मैं कहना चाहूंगी इसमें थोड़ा सा। जी बोलिए। एक चीज है कि जब हम अटेंशन को डिवाइड करते हैं तो उस समय हमारा जो अटेंशन है वो बहुत कंसंट्रेट होकर के डिफरेंट वे में वो अपना रिकॉग्निशन को एस्टेब्लिश करता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस करने से जो बढ़ने की बात है वो बढ़ेगी, वो उस प्रैक्टिस को घटने का सवाल मुझे नहीं लगता है। So Antonio, she has a question. I think Sudhir would like to translate. Sudhir, over to you. So difficult for me to translate. I'll do that. Antonio, her point is she's making a comment on the answer that you gave me and the discussion we had on the divided attention. So she's saying that Manjuji is saying that the attention can definitely be divided, but every time we try to attempt the division of the attention starts scattering into multiple directions, and it becomes difficult to hold on to it. But definitely it is sustainable, because as we put more efforts, certainly the attention should remain
sustainable. That divided attention should remain sustainable theoretically, but I'm repeating her first point that her experience is that it does scatter into multiple locations and it leads to identification at the same time. Quite correct. Yep. Yeah. It's So, exactly what go ahead. that happens, Manju. It happens because when we are trying to move into a higher level of consciousness, we have to open a channel that did not exist before in the operation of the centers. We have to create another track, as if you were driving a big lorry, a heavy lorry in the jungle. You need to clear the way in order to advance. And to clear the way, you have to cut trees, you have to fill parts of it, you have to remove rocks, you have to do lots of things. And then you can move another bit forward and another bit forward. And like that, you build up this track of memory that allows you to, every time you move again into the same point, seems to be a bit easier. But you have to be quite permanent in order to do that. Until at one point, because of reiteration, then you find that the energy tends to flow and to stay in that particular level of the intellectual center. That is the intellectual part of the intellectual center. At that point, start to happen easily for you, or more frequently for you, up to the point in which you don't need to apply a huge effort to maintain it. And you can call that state gradually to your own will. But if you just push there and you sustain it, and then it may split for a bit, the level of consciousness may divide, but after that, it reacts back through the inertia of the previous habits and takes you back to square one, and sometimes a bit under that. There are lots of actions and reactions in the psychological progress, lots. So we have to be very gentle. We have to be very astute in the way that we move. We need to take samples and we push and we have advance, and then we let it loose again. Because if you try to trap it, it will escape. And it will make it more difficult. Yes, it's like the power of the gods. They don't let you have access there so easily. So give me 1 second, I'll just translate that for her. Manju ji, जो पहला आपका सवाल, जो आपका पहला कमेंट था, पहला जो आपका पॉइंट था, उसके बारे में वो आपके साथ पूरी तरह से सहमत है। वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, जो आप बता रही है उसी तरह होता है। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है और क्या उसको इस तरीके से देखना है कि समझिए जंगल है, जंगल में बहुत सारा कचरा है और हमें आगे जाना है, झाड़ है, पान है, हमें आगे बढ़ना है, वहां ट्रक ले जाना है, तो सब चीज हमें बीच में आएगी। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें सब चीजें रोकेंगी, तो हमें उतर के सब काटना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। फिर हम थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर से हमें झाड़, पान, पत्ते सब रोकेंगे, तो हम उसको जैसे क्लियर और करेंगे तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। उसी तरह ये जो मार्ग बना है, जो बाहर से मार्ग बना है जंगल में अंदर जाने का, उसी तरह अपने अंदर का जो साइकिज्म है, जहां अपने चैतन्य के स्तर को हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमें एक याददाश्त का मार्ग बनाना है। ये जो याददाश्त का मार्ग है, ये मार्ग इस तरह से बनता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फेल होता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फेल होता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फेल होता हूँ, तो मैं एक थोड़ा ऊपर जाता हूँ, फिर से गिर जाता हूँ, फिर से थोड़ा ऊपर चढ़ता हूँ, फिर से गिर जाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे मार्ग बनते जा रहा है याददाश्त का, क्योंकि हम जो है वो अपने याददाश्त का एक समेशन है। तो याददाश्त का एक मार्ग बनता है जो हमें ऊपर ले जाते अपने इंटेलेक्चुअल पार्ट के इंटेलेक्चुअल सेंटर तक ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए एक याददाश्त का मार्ग बनाता है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, मुश्किलें बढ़ती हैं, पर अगर हम इसके ऊपर सस्टेन रहते हैं, अगर हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली कार्य करते रहते हैं बिना थके, लेकिन उसको बिना पकड़े, उसको हम थोड़ा टाइट थोड़ा लूज, थोड़ा टाइट थोड़ा लूज, थोड़ा जाने दें थोड़ा आने दें, थोड़ा जाने दें थोड़ा आने दें, अगर इस तरह से हम ऊपर चढ़ते हैं और धीरे धीरे चढ़ते हैं, तो अपना याददाश्त का मार्ग एक तो पीछे से बनते जा रहा है, और ऊपर से जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेंटर तक, तो हमारा पूरा मार्ग जब तैयार हो जाता है, तो जब हम चाहें अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, हम इस मार्ग पर अपने आप पहुंच सकते हैं, जब हम चाहें तब।
लेकिन इसके लिए कार्यरत होना जरूरी है कि जैसे जैसे मुश्किलें आए हम उन मुश्किलों को हटाएं, जैसे कि रेवरी है या और तरह की मुश्किलें हैं जो हमारे याददाश्त के मार्ग को बनने से रोकते हैं, क्योंकि पुराने मार्ग बने हुए हैं। तो बता रहे हैं पुराने मार्गों को साफ करते रहना है और ऊपर चढ़ते रहना है। इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेंटर तक अगर ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, उसके बाद जो है वो अपने वश में आ जाता है। वो अपने मन से इसको उस स्टेट में फिर से जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, या इसे कहते हैं स्वचैतन्य या स्वचेतना का स्टेज। Hello. Oh, there's some lot of disturbance. Yeah, somebody is playing music in the background. I think it's near Manju ji. बोलिए मंजू जी। Anyway, I think मुझे we लग- are okay. Manju ji, बोलिए। श्रुति जी, let us speak, please. हाँ, go ahead. मुझे लगता है कि जब हम अपने उस मार्ग का निर्माण करते हैं, उस समय दो चीज और है जो आपने कहा ना कि कचरा साफ करके रास्ता बनाना, तो उसमें दो बड़ा और टूल्स है हमारे उस मार्ग में प्रयोग करने का। एक तो जो हमारी कल्पना शक्ति है, तो वो हमें लगता है कि उस समय हमारी कल्पना शक्ति भी जरूर हमारे साथ वो काम करता है, और वो हमारे अलर्ट होने का, जो एक सावधान करने का जो काम है, वो सिचुएशन और वो अलर्टनेस हमें हमारी कल्पना शक्ति हमें देती है कि हाँ, हम इधर से चलेंगे तो हमें बेहतर मार्ग मिल सकता है। Her point is that in order to facilitate us into what you just said about clearing the forest and going ahead and rising into the intellectual part of the intellectual center, rising the attention or the energy up till there, in that the work of the imagination will help us or will support us in doing this or doing this better. That's her point. Do you want to comment on that? Yeah, imagination is extremely important to everything that we do. But when you say imagination, you refer to exactly what? Imagining what? मंजू जी, आप जो बोल रही हैं कि ये जो साफ करने के लिए हम जो कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकती हैं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं कि कल्पना शक्ति मतलब क्या, किस चीज की कल्पना करेंगे आप? क्या जब हमारा वो जो ध्यान बंटता है, तो ध्यान बंट के हमारा विभिन्न, जी बोलिए ना। हाँ, तो ध्यान बंट के जो हमें भटका नहीं दे, इसके लिए हमारा एक जो अनुमान होगा कि हमें इसी मार्ग में जाना है, वो तय करने के लिए। Her point is about divided attention, that while we are dividing our attention, we shouldn't get distracted. So in order to ascertain the correct direction, the imagination will play a key role. Would you like to comment on that? Yeah, I mean, the best thing at that point is to not imagine anything. I mean, don't let it run wild, the imagination, because if you are trying to keep your attention and to divide your attention, obviously you need to have the intention over your attention. You need to have what is called directed attention. I will keep my attention into that. And for example, you keep your attention into in which way you are walking and what is happening outside. You are going along a park in a long road, and you are keeping your attention over your perception and over your walking. And then at the same time, you are trying to have a physical sensation as an anchor, as a point of reference. So it doesn't move anywhere. So you keep on the one hand your anchor, and on the other hand, you direct your attention into your perception, for example, or you could direct it into any other thing, the observation of the clock tower. And then you keep it to that, and you keep observing, but without forgetting your anchor, your point of reference, a point in the body.
So if at the same time you try to imagine things, then what happens is that you will lose track of what you are trying to do. Because you are proposing yourself for 5 minutes not to do anything else than to keep a reference in your anchor point, that let's imagine that is a sensation of your hand, and on the other hand, to direct your attention in what you are seeing in the park, and nothing more than that. When you start to make conclusions, to elaborate and to daydream, immediately you will forget one of the terms, or the park of your hand. Okay? So let me translate this. मंजू जी वो क्या बता रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बता रहे हैं कि इससे आपको थोड़ा चेतना है खुद को, यू हैव टू बी केयरफुल कि जब आप कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो कल्पना शक्ति आपको भटका सकती है और आपकी ऊर्जा को खर्च कर सकती है इमेजिनेशन में, और वाइल्ड इमेजिनेशन मतलब आपको हर चीजों का ख्याल आएगा जो एसोसिएशन से आता है, जो कॉन्ट्रास्ट से आता है, हर तरह का आपको कल्पना आएगी। तो बोलते हैं उस चीज को रोकने के लिए और ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए और ऊर्जा को बचाने के लिए करना यह है कि हमें ध्यान को बांटना है, और ध्यान को इस तरह से बांटेंगे कि एक ध्यान का 2 हिस्सा बनेगा। एक ध्यान आपके खुद के ऊपर रहेगा, कहीं भी समझिए किसी भी शरीर के एक भाग पे, समझिए आपके पैर पे, और दूसरा जो ध्यान का भाग रहेगा वो आपके परसेप्शन पे, माने आप जो देख रही हैं, आप चल रही हैं तो आपके वॉक पे, आप दौड़ रही हैं, आप कार्य कर रही हैं, कुक कर रही हैं, बाहर गई हैं, जो भी आप कर रही हैं, कार्य है, देख रही हैं, पढ़ रही हैं, उस पे आपका ध्यान रहेगा। तो आपका ध्यान जो है वो 2 हिस्सों में बटेगा, जिसे हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन। जब ये 2 हिस्सों में ध्यान बटेगा तो जो हमें रेवरी आती है, जो हमारे सारे एनर्जी को लीक करती है। मंजू जी आप हैं कि आपका डिस्कनेक्ट हो गया है? So I'll continue for the benefit of Shankar and Anil जी कि जब भी हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान को 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो जो रेवरी है वो आनी बंद हो जाती है, क्योंकि या तो रेवरी रह सकता है या तो ध्यान। अगर रेवरी आ रही है तो ध्यान नहीं रहेगा, और अगर मेरा ध्यान है तो रेवरी चली जाएगी, और वो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है जो रेवरी खर्च कर रही थी वो मुझे अवेलेबल हो जाएगा ध्यान को डिवाइड करने में और मेरे चैतन्य के स्तर को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब कल्पना मुझे भटकाती है या कल्पना आती है, तो इसका मतलब यह है कि मैं ध्यान में नहीं। मुझे अगर किसी भी और चीज का विचार आता है तो इसका मतलब यह है कि मेरा ध्यान मेरे ध्यान पे नहीं, या मेरा ध्यान मेरे परसेप्शन पे नहीं, या मेरा ध्यान मेरे कार्य पे नहीं है। जो 2 चीज डिवाइड करना है, जिसको बोलते हैं एक एंकर का ध्यान है, जहां मैं खुद के ऊपर एक ध्यान रखा हूं मेरे हाथ पे समझिए, और दूसरा ध्यान जो है वो मेरे कार्य पे है या मेरे परसेप्शन पे, जैसे समझिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या उसके ऊपर। तो जब ये डिवाइड हो जाता है तब मेरे चैतन्य के स्तर को बढ़ने के लिए एक मौका मिलता है, क्योंकि उतनी ऊर्जा अवेलेबल हो जाती है। Once the attention gets fully divided, that Yeah. means you reach a level of consciousness of yourself, and there you don't need to make an effort. As if you wake up in the morning and you wash your face, you don't need to make an effort not to fall asleep again, because the levels have a certain inertia. Once you break the floor of the level and you access, you stay there without much effort. Of course, if you get distracted, if you lose your style of care for that particular state, etc., yeah, you will drop back to a vigil. But the interesting thing is that we use the techniques of divided attention in order to break in to the level of self-conscious. That's why I was giving that explanation to Manju, that there is no room for imagination. Once you reach the level of consciousness of yourself, yes, you can imagine like always, but you always will be aware that you are imagining, and you will not be sucked into your imagination, because that will be a new reverie. You follow? The function of the reverie is that it creates illusion that establishes itself over the consciousness, but it doesn't refer to the activity of imagining. When you imagine being in consciousness of yourself, you know that you are imagining.
And the function of imagination is to open up other sort of permutations about lots of things, to review lots of things, to analyze imagination from your memory and from your imagination, etc., etc. It's another story altogether. So let me translate that, Antonio. Give me a minute. And we leave it here because I'll have to. Yeah, this will be the end of it, but I'll just translate what you just said for Manju ji and the others. तो मंजू जी, वो जो आपका विषय था उसी को आगे ले जा रहे वो, कि वो क्यों बता रहे थे आपको ये कि कल्पना पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कल्पना जो है वो ऊर्जा को लीक कर देती है। जहां अपने चैतन्य के स्तर को बढ़ाना है वहां पे थॉट्स आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, कल्पना आ जाती है जो कंटिन्यूअसली इसको ऊर्जा को खर्च कर देती है। और हमें चैतन्य के स्तर को बढ़ाने के लिए जिस वॉल्यूम में, जिस क्वांटिटी में ऊर्जा चाहिए, वो सारी ऊर्जा हमें बचा के मिलेगी। तो बचाएंगे कैसे? बचाएंगे इस तरह से कि विचारों को आने नहीं देंगे। अब वो कैसे नहीं आएंगे, बिकॉज वो तो आते हैं। तो उनको नहीं आने के लिए जो ध्यान को है वो दो हिस्सों में बांटना है। ध्यान को जब हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ध्यान मेरे ऊपर है, खुद के हाथ के ऊपर, और दूसरा ध्यान अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं उसके ऊपर है। तो मैंने ध्यान को बांट दिया, मतलब मेरा ध्यान मेरे ध्यान के ऊपर है। तो जब मेरा ध्यान मेरे ध्यान के ऊपर है, या मेरे कार्य के ऊपर है, या मेरे एक्शंस के ऊपर है, तो क्योंकि ध्यान बटा हुआ है, अब विचारों को आने की जगह नहीं है, ऊर्जा उसके लिए मेरे पास नहीं है अवेलेबल। तो अब क्योंकि ऊर्जा अवेलेबल नहीं है और मेरा ध्यान मेरे ध्यान के ऊपर है, तो जो ऊर्जा जमा हो रही है, उस ऊर्जा के जमा होने से और उस ऊर्जा के बढ़ने से, जैसे जैसे जो ऊर्जा बढ़ रही है, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरा स्व चैतन्य का जो स्टेट है वो उस तरह से बढ़ते जाएगा, और मैं स्व इच्छा से कभी भी वहां वापस जा सकता हूं, जब चाहूं तब वापस जा सकता हूं, बिकॉज अब मेरे पास इतनी ऊर्जा हो गई है, इतना ईंधन हो गया है मेरे पास। तो ये जो ईंधन है, ये जो ऊर्जा है, उसको जमा करने का जो कार्य है वो ये है जिसे हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन, कि मैं उसी स्टेट पे रहूं जहां मेरा ध्यान मेरे ध्यान के ऊपर है, कि मेरा ध्यान मैं जो कर रहा हूं उसके ऊपर है। ध्यान तो मैं दे ही रहा हूं बाहर, अब मेरा ध्यान भी है उसके मेरे खुद के ऊपर। तो दो हिस्सों में ध्यान बढ़ जाता है, और जैसे दो हिस्सों में ध्यान बढ़ता है, हमारी ऊर्जा जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे चैतन्य का स्तर बढ़ सकता है। और इसी के प्रैक्टिस को जब जैसे जैसे हम करते हैं और जैसे जैसे इसी कार्य में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम कार्यरत होते हैं, और एक याददाश्त की जो रास्ता है, एक याददाश्त का रास्ता बनते रहता है, जो हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है जब चाहे तब उस पर वापस जाने के लिए, ताकि हम पूरी तरह से जग जाएं, जिसे हम कहते हैं स्व चैतन्य का स्तर। Antonio, translation is done. Over to you. Thank you. Okay, friends, it is we are 40 minutes past our time. So आज हम we close the meeting here. Thank you very much everyone, and we'll continue next week, same time, same place, with this or another topic. Yes, we can work with a representation of the centers to see these connections of the energy to one and to the other is quite interesting. That is a graphic thing. एंटोनियो का सुझाव है कि अगले हफ्ते हम सेंटर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सकते हैं, अगर रुचि हो तो।